Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor. We have started the atomic structure chapter and we have already discussed some topics. We have discussed about atom and subatomic particles and also about the discovery of all the subatomic particles, that is discovery of electrons, discovery of protons and discovery of neutrons. अब जब हमको डिस्कवरी के बारे में पता है, एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है, we have to now study about the arrangement of the subatomic particles inside an atom. कि एटम के अंदर वो सारे subatomic particles कैसे arranged है. And for that we need to study about the atomic models. So the topic of today's discussion is atomic models, which tells us about the arrangement of the subatomic particles inside an atom. We already know about the subatomic particles, so now we will learn about the atomic models. So let us see the key points of today's discussion. Firstly, we will study about the definition of atomic models. कि ये atomic models क्या होते हैं या फिर उनका क्या purpose है, followed by Thomson's model of an atom. J.J. Thomson is a very famous scientist who discovered electrons, which was the first subatomic particle to be discovered. He also proposed a model of an atom and he was the first one to propose a model. So we have to study Thomson's model. But his models had some drawbacks. गलतियां थी उनकी मॉडल में, so we have to study the drawbacks of Thomson model. And to correct those drawbacks or those mistakes, Rutherford is another scientist who came up with a new nuclear model. So we will study Rutherford's nuclear model as well. So we will learn about the definition of atomic models, Thomson's model, drawbacks of Thomson's model, and Rutherford's nuclear model of an atom. So these are the topics of today's discussion. So firstly, we have to know what are atomic models. ये जो atomic models हैं, वो actually क्या होते हैं? So by definition, an atomic model is a theoretical representation. Why is it a theoretical representation? क्योंकि एक एटम इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. Whatever we derive are from experiments. कुछ experiment scientists perform करते हैं, उनसे they make some observations and then they put forward a theory. So an atomic model is a theoretical representation of the structure and behavior of an atom. Scientists study the structure and the behavior of an atom and then they put forward a theory. उनका एक assumption होता है कि maybe the atom looks like this. But since we cannot see an atom with our naked eyes or even with very strong microscopes, so it is a theoretical representation. It is a way to visualize and understand how subatomic particles, by now we know what subatomic particles are there, protons, neutrons and electrons, are arranged and interact within an atom. मतलब ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी अरेंजमेंट क्या है, एटम के अंदर वो लोग कैसे अरेंज्ड है और अरेंज्ड होके वो अपने आप में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं. So this is what atomic model tells us. So by reactions and experiments, scientists have theorized certain structures or models कि एक एटम शायद ऐसे दिखता हो. So why do we study atomic models? To understand about the arrangement and interaction of subatomic particles. जब सबएटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सर जॉन डाल्टन ने कहा था कि द एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम को उससे भी छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता. But now we know that subatomic particles exist. So now we will see how they are arranged inside an atom. These models have evolved over time as scientists gain a better understanding of atomic structure. पहले इतना आइडिया साइंटिस्ट को नहीं था. पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कुछ साल बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई and then came the neutrons. So each time scientists learned about a new fact, they changed their theories about the atom. So the models of atom have evolved over time.
जो भी ड्रॉबैक्स निकले मॉडल्स में उनको करेक्ट करते हुए एक नया मॉडल निकले. So to correct the mistakes, we have many models. जैसे the first atomic model was proposed by Thomson and it had some mistakes. To correct that mistake, Rutherford again came up with a new model. वैसे Rutherford के भी कुछ mistakes थे and it was correct and so on. So the models have evolved over time. Now, what is the aim of atomic models? कि उनकी क्या purpose है? क्यों atomic models की need है? To account for the stability of an atom. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नोबल गैसेस, वो रिएक्शन नहीं करते, दे आर अनरिएक्टिव. सिमिलरली देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स लाइक सोडियम और alkali metals, alkaline earth metals which react very fast. Then there are some elements which react but they take some time. उतना fast reaction वो नहीं करते. So why is there a difference between all these elements and their stabilities? So the atomic model can tell us about the stability of an atom. Compare the behavior of different elements. As I said, some elements react very fast, some elements do not react at all. So ये सारे differences क्यों है? To study the differences and to compare the behavior, we have to know about the atomic models. To explain the formation of different kind of molecules. कि reaction करते ही क्यों है? Now, an atom is neutral. जितना negative charge होता है उतना positive charge भी होता है. So what is the need for a chemical reaction? Why do some elements react? Why do they form molecules? This is also explained by atomic models. And lastly, to understand the nature of electromagnetic radiations absorbed or emitted by the atoms. Atoms emit some kind of radiations. We will study in the further classes about alpha rays, beta rays, gamma rays. So, why do atoms emit radiation? Why do they absorb any radiations? So, that is also explained by atomic models. So, why is an atom stable? Why atoms of different elements are different? Why they react to form molecules? And why they absorb or emit radiations can all be explained with the help of atomic models. So this is the purpose of atomic models. इसलिए हम atomic models को study करते हैं. That is why it is important. Some important atomic models are Thomson's model. This is the first atomic model that contained some kind of subatomic particles. Thomson ने ही पहला subatomic particle discover किया था जो कि है electrons. Before that, there was no concept of subatomic particles. So that is why his model is the first atomic model of an atom. It is also known as the plum pudding model. Why it is called a plum pudding model or what is plum pudding? We will come to know soon. उसके बाद थॉमसन के मॉडल में जो मिस्टेक्स थी उसको करेक्ट करने के लिए रदरफोर्ड एक मॉडल लेके आए जिसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल. And he proposed this model by conducting his very famous gold foil experiment. What is the gold foil experiment? We will also study in today's lesson. Again, Rutherford's model had some mistakes. Now, if there aren't any mistakes, there is no need for correction. अगर आप कोई गलतियां करते हो तभी आप उसको करेक्ट करना चाहोगे. So, Rutherford के मॉडल से भी सारे factors about an atom could not be explained. So the next model was proposed by Bohr and it is known as Bohr's model. So what Bohr proposed we will see in coming lessons. And finally, Bohr also could not explain certain aspects and that was solved by modern quantum mechanics model. Very recently, quantum field में बहुत developments हुई in the field of quantum chemistry, quantum physics. And then scientists were able to explain about the nature and behavior of atom using quantum mechanic model. So this is the model that is studied today and it is able to explain almost everything without any mistake. So this is the ultimate atomic model till date. So we started with Thomson's model, then Rutherford's model, followed by Bohr's model and lastly quantum mechanic model.
So in today's lesson, we will study about Thomson's model and Rutherford's model. So now let us see about the Thomson's model. The Thomson, after his discovery of electrons, how he proposed an atomic model. The very famous Joseph John Thomson. If you have already watched my previous videos, you are familiar with him because he is the discoverer of electrons. J.J. Thomson proposed his plum pudding model. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है उनके मॉडल का. Of an atom in 1898, 1 year after his discovery of electrons. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के 1 साल बाद में ही उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था. एक थ्योरी उन्होंने पब्लिश की थी. दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बिफोर द डिस्कवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So obviously he was not sure about his model. उनको लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, and he put a theory. But since his model was proposed before the discovery of protons and neutrons, it had a lot of drawbacks. It could not explain a lot of things. But ये idea पहले उनके दिमाग में आया. So he is credited with the first atomic model, which he proposed 1 year after his discovery of electrons. After the discovery of electrons, J.J. Thomson proposed first nuclear model of an atom. He based his model on the fact that an atom is electrically neutral. उन्होंने जो मॉडल थ्योराइज किया, जिस मॉडल को उन्होंने वर्ल्ड के सामने रखा, उनका लॉजिक क्या था उस मॉडल के पीछे कि एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. Already he had discovered the negatively charged particles which he called the electrons. But the protons and neutrons were not discovered. लेकिन उनको लगा कि पॉजिटिव चार्ज जरूर कुछ होगा because an atom is overall neutral. Because if atom only had negative charges, it would give us an electric shock. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से फ्लो होती है. But there are equal number of positive charges and negative charges. So he thought that there might be something positive also inside an atom that is balancing out all the negative charges of the electron. तो यही उनका main logic था behind his atomic model. Many different names were given to Thomson's model such as plum pudding, raisin pudding और watermelon. हम सबको पता है कि watermelon क्या है. Maybe we do not know about plum pudding or raisin pudding, but watermelon will help us visualize what Thomson thought back in 1898. So according to Thomson, if an atom contains electrons which are negatively charged, we already know about this, negatively charged particles, it must also contain an equal amount of positive charge. मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जब थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को थ्योराइज किया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. So he did not know for sure that there is something called protons which are positively charged. उनको पता नहीं था. लेकिन उन्होंने अपना कॉमन सेंस लगाया, सिंपल लॉजिक लगाया कि अगर एक एटम को अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, उन्होंने जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की है, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज भी एटम में होना चाहिए. So he did not know for sure about protons, but he just uses logic and common sense. So if an atom contains electrons which are negatively charged particles, it must also contain an equal amount of positive charge to maintain its electrical neutrality. कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए जितना उसका नेगेटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए. So this was his first assumption. It was all based on assumption and theories. Since the mass of an electron is very less, this we also know because we have already discussed about the discovery of electrons.
The positive charges might be responsible for the overall mass of an atom. एटम का एक मास है, भले ही बहुत ही कम है लेकिन कुछ मास है. एटम का जो मास है that could not be explained by electrons because the mass of electrons is even less. It is 10 to the power minus 31 range. So the mass of electron did not contribute to the mass of atom at all. So the positive charge species might be the one which is also responsible for the overall mass. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्कवरी की है और इलेक्ट्रॉन्स मास में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, मतलब कुछ तो होना चाहिए जो ऑब्वियसली एटम के मास को कंट्रीब्यूट कर रही है. एंड ही अज्यूम ये जो पॉजिटिव चार्ज के बारे में उन्होंने सोचा, मे बी द पॉजिटिव चार्ज इज कंट्रीब्यूटिंग टू द मास ऑफ एन एटम. एंड ही वाज पार्टली राइट बिकॉज द मास ऑफ एन एटम कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई. So he thought that protons or the positive charges might also be responsible for the overall mass. So the two assumptions of Thomson was that something positively charged must be present in an atom to make it electrically neutral, and that positive charge must also be contributing to the overall mass of an atom. क्योंकि electrons का तो कुछ खास mass है नहीं, so it must be the positive charge that is contributing to the mass of an atom. So these were the two assumptions that Thomson made before theorizing and proposing his nuclear model. So this is a schematic diagram of Thomson's atomic model. थॉमसन ने अपने दिमाग में जो मॉडल सोचा था कि एटम कैसा दिखता है, it was something like this. As you can see, it is spherical in shape, it is like a ball, and the ball is positively charged. Sphere of positive charge. मतलब कोई बॉल इमेजिन कीजिए, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, एंड सपोज दैट बॉल इज मेड अप ऑफ टोटली पॉजिटिव चार्ज एंड उसके ऊपर एम्बेडेड है नेगेटिव चार्जेस. मतलब अलग से लगे हुए हैं कौन? उन्हें नेगेटिव चार्जेस व्हिच इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स. So what are these negative charges? These are electrons. We have also discussed about the symbol of electrons, E, negative. So he thought, थॉमसन ने सोचा कि ये जो एटम है, it might look like this. It is a ball made of positive charge and उस बॉल के ऊपर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, वो embedded है, वो attached है, वो लगे हुए हैं. So why did he think like this? What is the logic? So by that time everyone knew कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, वहां पे सिर्फ एक चीज का लेन देन होता है, which is electrons. So electrons are the one because of which chemical reaction takes place. कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कोई गेन करता है, कोई कोई शेयर करके एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, बट जो भी होता है इट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे उनका लेन देन करना इजी हो, जहां से हम इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे पाए, इलेक्ट्रॉन्स इजीली ले पाए या शेयर कर पाए. That is why he imagined the negative charges of the electrons on the surface. अलग से मानो किसी ने उसको अटैच कर दिया है. The entire ball is positively charged and उसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन मानो अटैच किए गए हैं, एम्बेड किए गए हैं. So this was his logic because electrons only participated in chemical reaction. न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात अलग है, दोज आर मच एडवांस्ड रिएक्शंस जहां पे सब पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब पार्टिसिपेट करते हैं. सिंपल केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं और उनके पार्टिसिपेशन के लिए उनको ऐसी जगह पे प्लेस होना चाहिए जहां से उनका मूवमेंट इजी हो, जहां से वो शेयर हो सके, डोनेट कर दिए जा सके, टेक कर दिए जा सके, मतलब आप ले भी सको, दे भी सको. So that is why he imagined that the electrons were embedded on the sphere of positive charge. So this was Thomson's idea of an atomic model. Thomson proposed that an atom is spherical in shape. In which the positive charge is uniformly distributed. ये एक बहुत ही important point है उनके थ्योरी का
कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बेसिकली एटम इज लाइक अ बॉल विच इज made up of positive charge. So the positive charge is uniformly distributed. This is a very important point of what Thomson thought. Ultimately, we will see that he was wrong, but this is what he thought. Electrons are embedded on the surface. Surface पे लगे हुए हैं, embedded on the surface of the sphere, to give a stable electrostatic arrangement. अगर बॉल हमारा पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं, तो ही अज्यूम कि नेगेटिव चार्ज ऐसे अमाउंट में लगे हुए हैं या फिर ऐसे अरेंजमेंट में लगे हुए हैं that it makes the atom stable and it makes it also neutral. So Thomson thought that the atom is spherical in shape and the sphere is made of entirely positive charge which is uniformly distributed. ऐसा नहीं कि sphere के सिर्फ एक portion में positive charges है. He thought that the entire sphere is uniformly coated with or uniformly made up of positive charge, and in that the electrons are embedded and it gives a stable electrostatic arrangement. So from where did the plum pudding model name come? So now let us compare a plum pudding or a watermelon to his atomic model, Thomson's atomic model. So again, थॉमसन ने क्या सोचा था कि एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लगे हुए हैं. प्लम पुडिंग इज बेसिकली लाइक अ केक जहाँ पे जो प्लम है, जो रेजन्स है, वो ऊपर लगे रहते हैं. सो दैट इज व्हाई द नेम प्लम पुडिंग केम. लाइक द केक इज द पॉजिटिवली चार्ज. ये जो पूरा केक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो है पूरा पॉजिटिव चार्ज. और ये जो ऊपर डेकोरेशंस है या फिर जो प्लम है, रेजन्स है, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आप यहाँ से एक पीस यहाँ से निकाल के आप खा सकते हो, ऐसे टाइप का उन्होंने विजुअलाइज किया था. इससे बेटर एग्जांपल टू विजुअलाइज इज वाटरमेलन, समथिंग दैट वी ऑल हैव सीन एंड ईटन आई होप. तो एक वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, जो सीड्स को हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं बिकॉज वी डू नॉट कंज्यूम द सीड्स. दिस सीड्स आर द इलेक्ट्रॉन्स जो लगे हुए हैं सरफेस के ऊपर, जो लगे हुए हैं. और जो वाटरमेलन, जो एंटायर वाटरमेलन है, वो है पॉजिटिवली चार्ज. दैट इज व्हाई थॉमसन्स मॉडल इज आल्सो कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल और द वाटरमेलन मॉडल. कि जो केक है या फिर जो वाटरमेलन है, वो है पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ, यूनिफॉर्मली बना हुआ. उसके ऊपर जो प्लम है, रेजन है या फिर जो वाटरमेलन के सीड्स है, जिसको आप आराम से ऊपर से निकाल सकते हो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन. So if you compare these two diagrams, I hope you can understand why Thomson's model was called the plum pudding model. Plum pudding is a very famous Christmas dessert. वहाँ पे ये डेजर्ट बहुत पॉपुलर था, इसलिए इसको plum pudding model कहते हैं. But you can compare it to a watermelon also. It has similar theory. So I hope that you have understood that why Thomson's model is called the plum pudding model and what is it all about. An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि इस मॉडल का, थॉमसन के मॉडल का जो इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है कि जो एटम का जो मास है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो कोई मास आ नहीं रहा. ही अज्यूम दैट जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे या फिर जो पॉजिटिवली चार्ज जो भी स्पीशीज है, वही मास में कंट्रीब्यूट कर रही है. So agar the positive charges are spread uniformly over the sphere, then the mass is also distributed all over the sphere, which is the atom. So this is a very important feature of his model कि जो positive charge है जिससे mass भी contribute हो रहा है atom का, that is not confined. कि ऐसा नहीं है कि ये एक sphere है, सिर्फ यहाँ पे positive charge है या फिर यहाँ पे mass है या फिर इस एरिया में सिर्फ है. It's not like that. It is all over the sphere. This is all over the sphere. The positive charge is distributed all over the sphere and the positive charge only contribute to the mass. So the mass is also uniformly distributed. This is what he assumed. This was the assumption made by Thomson
जिसको यूज करके उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल थ्योराइज किया था, जिसको उन्होंने पब्लिश किया था। नाउ दोज हु ऑलरेडी नो, बिकॉज वी नो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, काफी सारे पार्टिकल्स है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस मॉडल इज रॉन्ग, so this is not correct. So obviously other scientists, when they researched, when they studied, they saw that all the parameters of an atom, every aspect of an atom cannot be explained by Thomson's atomic model. ये सारे जो points है atomic model का जो काम है, सब कुछ prove करना, सब कुछ explain करना, थॉमसन का atomic model वो सब explain नहीं कर पा रहा है. So now we come to the drawbacks of Thomson's atomic model. Thomson's model was able to explain the overall neutrality. हाँ, उनके मॉडल से न्यूट्रलिटी तो जरूर एक्सप्लेन हो रही है, क्योंकि जो बॉल है वो है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स सारे एम्बेडेड है वो है नेगेटिव, तो जितना बॉल में पॉजिटिव है उतना ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर न्यूट्रल हो रहे हैं. थॉमसन के मॉडल ने न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था, बट व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट्स? It could not explain them, so it had certain drawbacks. कुछ गलतियां थी. It could not explain the stability and reactivity of an atom. ठीक है, अच्छी बात है, एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये रिएक्ट क्यों करते हैं? मतलब कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो एटम को रिएक्ट करने पे मजबूर कर रही है? तो नोबल गैस रिएक्ट ही नहीं करती, कुछ एलिमेंट्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों है? क्यों रिएक्शन हो रही है? क्यों एक एटम स्टेबल है? This could not be explained by Thomson's atomic model. It did not account for the presence of a nucleus. तो बाद में जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब उनको कैसे प्लेस करना है, प्रोटॉन को कहाँ पे बिठाना है, न्यूट्रॉन को कहाँ पे बिठाना है, या फिर जो न्यूक्लियस है, एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में भी इस मॉडल ने कुछ नहीं बताया था. थॉमसन्स मॉडल डिड नॉट टेल अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस. It could not elaborate about the absorption and emissions of radiations from an atom. जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव एटम, जहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वहां से बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे मैंने बताया था, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, वो सब क्यों निकल रही है? That also could not be explained by Thomson's model. So Thomson's model could explain the neutrality, but these points about the stability, about the nucleus, about radiations could not be explained by Thomson's model. So now if there is a problem, it has to be solved. So now scientists again started researching on how to solve these problems. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट ट्राई टू सॉल्व एनीथिंग. आप कब अपना दिमाग लगाओगे? जब किसी चीज में आप अटक रहे हो, व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनीथिंग, लाइक इफ यू आर स्टक इन अ मैथ प्रॉब्लम, यू विल ट्राई टू थिंक कि व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व इट. सिमिलरली साइंटिस्ट्स वर नाउ स्टक, they could not move forward, so they started researching on a new atomic model. So now comes the Rutherford's atomic model. Because Rutherford did his gold foil experiment and he saw that if Thomson's model is correct, then his observations are not matching. So it was Rutherford who corrected some of the mistakes of Thomson's model and came up with a new model of his own, which is the Rutherford's atomic model. Now we will study about Rutherford's model. Rutherford pointed out the mistakes of Thomson's model and proposed his new atomic model, which is Rutherford's model. We already know about Rutherford because he was the one who discovered protons. Ernest Rutherford proposed a new nuclear model of an atom in 1911 by performing a scattering experiment, famously known as the gold foil experiment. तो रदरफोर्ड ने अपनी जो न्यूक्लियर मॉडल थी एटम की, he proposed that in 1911 even before he discovered protons.
एंड ही डिड दैट बाय परफॉर्मिंग अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको फेमसली जाना जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से. And his model was able to solve some of the drawbacks of the Thomson's model. Rutherford, along with his students, performed the gold foil experiment to determine the nuclear model of an atom. He bombarded a very thin gold foil with alpha particles. तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही पतले गोल्ड फॉयल को उन्होंने हिट करवाया विद अल्फा पार्टिकल्स. So he bombarded a very thin gold foil with alpha particles. From the results of his experiment, Rutherford concluded that Thomson's model was incorrect. थॉमसन ने जो मॉडल इमेजिन किया था, जो मॉडल प्रपोज किया था, वो सही नहीं है. And then he proposed a new model. So this was done by Rutherford and his students using the gold foil experiment. This is a schematic diagram of the gold foil experiment. This is an alpha particle emitter. ये एक सोर्स है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है. I mentioned this in my last video. Again, I will mention alpha particle is denoted as an helium atom, or more specifically a doubly charged helium atom. Basically, in helium, there are 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. If you remove the 2 electrons, we will just be left with 2 protons and 2 neutrons. तो जब इस पार्टिकल को, जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, उसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल. So it can be denoted by a helium atom. So this is the symbol of alpha particle. Basically, it's a doubly charged helium atom. So ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जहां से ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है. ये है हमारा गोल्ड फॉयल. The alpha particles are hitting the gold foil. And this entire experimental setup is covered with a fluorescent screen. We already know about fluorescent screen. जब कोई रेडिएशन हम इस स्क्रीन पे डालते हैं, उस रेडिएशन को वो absorb करके emit कर देती है, and we see some form of light, which I think you can see here. The red dots are the little glow. The screen shows a little glow. Obviously, alpha particles are very small. We cannot see them. So when the alpha particles hit the fluorescent screen, we can see the small glow of light. That is why fluorescent screen is very important for nuclear reactions or nuclear experiments. So this is the entire setup of gold foil experiment. We have an alpha particle emitter, gold foil, and a fluorescent screen. So whatever I explained in that diagram, I have just written it out. A stream of high energy alpha particles. Alpha particles का energy काफी ज्यादा होता है. From a radioactive source was direct at a thin gold foil. Obviously, because the name of this experiment is gold foil, surrounded by a fluorescent screen. तो ये हो गया हमारा setup. Whenever the alpha particles struck the screen, जब भी alpha particles हमारे fluorescent screen से टकराती है, tiny glow of light was produced at that point. So this is the use of the fluorescent screen, that we cannot observe the alpha particles. वो हम नहीं देख पाते, लेकिन हम ये जो लाइट का ग्लो है स्क्रीन पे वो देख पाते हैं. और ये ग्लो कब होता है, जब अल्फा पार्टिकल्स जाके उस स्क्रीन से टकराती है. So this is the gold foil experimental setup. Now let us see what happens in the gold foil experiment and what Rutherford observed. So let me draw it for you simply. ये हो गया हमारे अल्फा पार्टिकल एमिटर. ये है एक थिन गोल्ड फॉयल. जीएफ का कुछ और भी मतलब होगा, लेकिन यहाँ पे आई मीन गोल्ड फॉयल. एंड हियर इज अ फ्लूरोसेंट स्क्रीन. सो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं. So
The first observation that Rutherford made was that most of the alpha particles passed in a straight line or they passed undeflected. मतलब straight line में ही निकल जा रहे हैं. Obviously, how did he observe that? Because he saw some glow over here. Particles को हम obviously naked eye से नहीं देख सकते, लेकिन हम ये ग्लो जरूर देख सकते हैं. तो मतलब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स टकरा रही है जिसकी वजह से ये ग्लो हमको दिखाई दे रहा है. So this means most of the particles are passing without any problem. They're passing in a straight line. They're not getting deflected. They're not hitting anything. They are just casually passing in a straight line. And this was the first observation of Rutherford. Now, for the second observation, Rutherford observed that there are particles, very few particles, that are getting deflected. कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत ही कम है. वेरी फ्यू पार्टिकल्स, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि कुछ डिफ्लेक्शन है. इस डिफ्लेक्शन एंगल को आप कह सकते हैं थीटा. So he observed that maximum particles are passing undeflected and a very small amount of particles are passing. They're showing some deflection. कुछ यहाँ deflection हो रहा है. This was his second observation. And finally, a very important third observation. A very few particles, मतलब 1 in 1 million ऐसे type particles, they are just reflecting straight back. मतलब 180 degree deflection they are showing. मतलब वो पास ही नहीं हो रही है, वो as if किसी invisible wall से टकरा के वो वापस आ रही है. So I hope this diagram is clear. The drawing is very bad, but I hope the diagram is clear. What I am trying to make you understand is clear. Most of the particles are passing undeflected. कि ज्यादातर जो particles है वो straight line में undeflected ही pass कर रही है. उनमें से कुछ particles है जो थोड़ा deflection दिखा रही है यहाँ पे, which I have indicated by blue. And उससे भी कम very few particles like 1 in 1 million particles, they are coming straight back. They are showing 180 degree deflection, जैसे कि कुछ invisible चीज से वो टकरा के straight वापस आ रही है. So these were the observations, the three main observations made by Rutherford in his gold foil experiment. So the observations that was made by Rutherford, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected, indicated by red. Most of the particles they passed undeflected and they showed a glow over here on the fluorescent screen. A small fraction, उनमें से कुछ particles ऐसे थे जो deflection दिखा रही थी. A small fraction of the particles were deflected by small angles. कुछ कम angles में वो deflect कर रही थी, मतलब वो straight line में undeflected travel नहीं कर रही. Very few of the particles bounced back completely. They showed 180 degree deflection. मतलब बहुत ही कम particles ऐसे थे जो पूरा bounce back करके वापस आ रही थी, showing 180 degree deflection. So these were the three main observations made by Rutherford, that most particles passed undeflected, small fraction of particles showed some deflection, very few particles bounced back completely. Now let us imagine Thomson's model. So we have just studied Thomson's model. This is a positively charged sphere, full of positive charge, positive charge. So the sphere is complete. Now we have the pudding is complete. Now we will give the plum, which is basically the electron. It is embedded on the sphere. जो थॉमसन बता के गए थे. So this is basically the Thomson's model of an atom. मतलब थॉमसन ये बता के गए थे कि एटम का अरेंजमेंट ऐसा होता है.
So now we will keep our alpha particle emitter over here. So we know that alpha particle is basically what? It is a doubly charged helium atom. तो दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज. So alpha particles are basically what? They are positive. I hope that's right. So now we are just giving alpha particles. कि गोल्ड फॉइल में गोल्ड के ही एटम होंगे और एटम थॉमसन बता के गए थे कि ऐसा दिखता है. बहुत अच्छी बात है. तो हम अभी अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे हिट कर रहे हैं इस एटम में. So now by simple logic and common sense, this has positive charge. This is maximum. This is positive charge. ये जो बॉल है ये पॉजिटिव चार्ज ही है और ये हमारा जो रे है ये भी पॉजिटिव चार्ज है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रे इसको क्रॉस करके अनडिफ्लेक्टेड ये पास हो जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था. दिस इज नॉट पॉसिबल. So only two possibilities are it is getting reflected कि यहाँ से ये टकरा के रिपेल होके इधर उधर वो डिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर ऐसा हो सकता है कि वो फिर से लौट के यहाँ पे वापस आ रहा है विच इज 180 डिग्री डिफ्लेक्शन. लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा हो. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड वी नो लाइक चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा. तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे पास करके स्ट्रेट लाइन में अनडिफ्लेक्टेड चले गए. तो अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्वेशंस वो नहीं कर पाते. उनको मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स के मिलते हैं या फिर 180 डिग्री रिफ्लेक्शन के मिलते हैं. But he observed that most alpha particles go through the foil undeflected, straight line में चले जा रहे हैं. लेकिन अगर थॉमसन का मॉडल हम कंसिडर करें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. So now Rutherford was confirmed that Thomson's model was incorrect. थॉमसन जो बता के गए थे वो मॉडल अब सही नहीं है because his observations are not matching logically with the Thomson's model. So now we can say that Thomson's model was actually not correct. So Rutherford concluded that most of the space in the atom is empty. कि ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है, empty. Because of which particles can pass undeflected. अगर खाली नहीं होता, अगर कुछ रहता उसमें तो पार्टिकल्स कभी भी उसको पास करके straight undeflected नहीं निकल पाते. So most of the space in the atom is empty. मतलब ये जो स्पेस है हमने ये जो एक सॉलिड बॉल की तरह इसको इमेजिन किया था थॉमसन ने वो सही नहीं है. मतलब इसका अंदर का ज्यादातर खाली ही है. The entire positive charge must be concentrated in a small volume inside the atom. It is not uniformly distributed. Why? Most of the alpha particles pass undeflected. Very few alpha particles, they show some deflection. Deflection कब शो होगी? जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज से जाके टकराएगा. तो जब डिफ्लेक्शन इतना कम है मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है उस एरिया भी बहुत कम है. So the entire positive charge is not uniformly distributed as said by Thomson. Thomson ये बता के गए थे कि जो स्फीयर है वो पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है जो मास है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है. But it is not true from Rutherford's observations. Calculations from the deflection angles. जो deflection angles थे, जो deflection के angles थे यहाँ पे जो थीटा है, he used these angles and made some calculations and found that the region of the core positive charge was negligibly small as compared to the total volume of the atom. मतलब उनको ये पता चला था कि अगर एटम इतना ज्यादा अगर एक बड़ा एक स्पीशीज है या फिर उसका स्ट्रक्चर है तो उसमें न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, मतलब एक डॉट समान है उसका न्यूक्लियस. फॉर इमेजिनेटिव रेफरेंस आप ये सोच सकते हो कि अगर एक एटम का रेडियस है 5 किलोमीटर
एक 5 किलोमीटर रेडियस को यूज करके अगर आप एक एटम को आप इमेजिन करते हो, उसके बीच में आप अगर आप एक क्रिकेट बॉल रखते हो, तो वो क्रिकेट बॉल ही है हमारा जो सेंटर फोर पॉजिटिव चार्ज। मतलब एटम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा छोटा है। 5 किलोमीटर के रेडियस को पकड़ के आपका एटम है, और उसके अंदर एक क्रिकेट बॉल समान एक न्यूक्लियस है। So this is the conclusion, very important conclusion that Rutherford made from his experiments. कि एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली रहता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही ज्यादा छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो एरिया एटम के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। So using his conclusion, Rutherford proposed the atomic model to be like this. कभी भी प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो ही जस्ट अज्यूम दैट ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज तो होना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस आउट करना है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंट्रल छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड में मूव कर रहे हैं। You can compare this model to the little model over here. In each slide you have seen. Basically, I have put Rutherford's atomic model in each slide as decoration. But now you are studying about it. रदरफोर्ड ये प्रपोज इस मॉडल को उन्होंने प्रपोज किया था। अगर आप सोचे तो यू कैन कंपेयर इट टू अ सोलर सिस्टम, कि बीच में सोलर सिस्टम में जैसे बीच में सन रहता है, उसके अराउंड में जैसे प्लैनेट्स रहते हैं, वैसे रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को इमेजिन किया था। जैसे थॉमसन ने इमेजिन किया था लाइक अ प्लम पुडिंग और अ वाटरमेलन, सिमिलरली रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कैन बी कंपेयर्ड टू द सोलर सिस्टम। According to Rutherford's model, the positive charge and the mass, ये पॉजिटिव चार्ज और मास इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ही मास कंट्रीब्यूट होता है, क्योंकि अभी भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, ये हमको ध्यान में रखना है। द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एन एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही छोटे रीजन में ही पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज है, एंड उसका उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The nucleus is surrounded by electrons which move around the nucleus with very high speed in separate circular paths known as orbit. उनका मानना था कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करती है। ये उन्होंने क्यों सोचा था? क्योंकि इट वाज observed from experiments that an atom has energy, it has kinetic energy, it has potential energy. तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने के लिए, ये सब फिजिक्स की बातें हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने के लिए किसी बॉडी को मोशन में होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली खड़े हो तो आप में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सो if the atom has energy, it has kinetic energy, that means something inside the atom is moving, and Rutherford said that it is the electrons that are moving around the nucleus in a very high speed in separate circular paths called orbit. जैसे planets revolve करती है सन के अराउंड में in orbit, like that, electrons also revolve around the nucleus in orbits. The nucleus and electrons, nucleus is positive, electrons are negative, so they are obviously held together by electrostatic forces of attraction. Nucleus positive है, electrons negative है, obviously उनमें एक force of attraction है, क्योंकि ये opposite charges है, attract करती है, तो ये जो structure है atom का, जो stable structure है, that is because of the electrostatic force of attraction between nucleus and electron. So again, if we go back to this diagram, this is the nucleus, and these are the electrons orbiting or revolving around the nucleus in this path called orbit. You can compare it to the solar system. You can compare it to the solar system. See, this is the sun and these are the planets. So this is the Rutherford's atomic model, जहाँ पे एक सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, एंड द structure of the atom is stable because of the forces of attraction. So these were the theories that Rutherford concluded from his gold foil scattering experiment. लेकिन इनमें भी कुछ drawbacks थे. There were still some points that could not be explained by Rutherford. He had obviously corrected the mistakes of Thomson,
But now there were more questions. और भी बहुत drawbacks थे जो रदरफोर्ड के मॉडल से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, and I will discuss them in the upcoming lessons. For now, we saw about the first atomic model which was given by Thomson. It was proved wrong by Rutherford's gold foil experiment, and he put forward a new model using his conclusions from the experiments. I would like to thank you all for being a part of this lesson. I hope this was informative and fun for you to learn. These are all scientific histories. ये टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. मे बी इन स्कूल एग्जाम्स अ फ्यू क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स, but they hardly come in your competitive exams. But to study and understand advanced topics, the understanding of basics is very important. के बाद जो एटॉमिक मॉडल्स आएंगी वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी. ये सारी बेसिक चीज़ें थे. So if you understand why are we studying the advanced models, what is the use of the advanced models, हमने advanced models के बारे में कैसे सोचा, we need to understand the basics कि कहाँ से हमने start किया and कैसे हमने evolve किया. So this is for your learning and understanding for the advanced topics. This is mostly history, scientific history. So I have tried to make it interesting for you, and I hope this was interesting and entertaining for you to learn. Thank you so much. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy, where you will get regular classes and you will also find some fun content in shorts and reels. Most importantly, we will have doubt solving sessions also. I would like to request you all to subscribe to our YouTube channel and follow our page on Instagram for more updates. Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you haven't subscribed, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more updates. Thank you so much.